Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Tabinda Shoaib and I am working as an English teacher at Divisional Public School and College, Sahiwal. I welcome you all in today's English class. Today, our topic is nouns, number. Before starting the lesson, I would like to share objectives. By the end of the lesson, you will be able to identify nouns in numbers and recognize singular and plural nouns. And you will be able to convert singulars into plurals. Nouns नंबर शुरू करने से पहले आप मुझे बताएंगे कि nouns क्या होते हैं? Yes, nouns are naming words. The name of a person, place, or thing is called noun. Nouns on the basis of numbers can be classified as singular and plural nouns. Countable nouns can be both singular and plural. For example, if you see a bird, you will call it bird. But if you see more than one bird, then you will call them birds. Very good. A singular noun names one person, place or thing. Singular noun एक person, एक place या एक जगह को शो करता है. For example, boy, school, bag. A plural noun names more than one person, place or thing. For example, boys, schools, and bags. We add s to form the plural of most nouns. For example, boy, boys. Bag, bags. School, schools. If a noun ends in s, double s, sh, ch, or x, we add es to its singular form to change into plural form. For example, boss, bosses. Fox, foxes. When the noun ends in y, we drop the y and add ies. जब नाउन y पे एंड होगा तो हम y को ड्रॉप कर देंगे और उसकी जगह पे ies ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हॉबी, हॉबीज. यहाँ हमने y को ड्रॉप कर दिया और उसकी जगह ies ऐड कर दिया. For example, fly, flies. Baby, babies. If there is a vowel before the y, we add only s to the singular. Toy, toys. Tray, trays. Key, keys. When a noun ends in f or fe, we drop f or fe and add EVES. जब नाउन F या FE पे एंड हो रहा होगा तो हमने F और FE को ड्रॉप करके उसकी जगह EVES ऐड कर देना है. फॉर एग्जाम्पल, हाफ, halves. Knife, knives. Leaf, leaves. However, we simply add s to some nouns ending in f or fe. लेकिन कुछ nouns ऐसे होते हैं जो f या fe पर एंड हो रहे होते हैं मगर हम उनका प्लूरल बनाते हुए सिर्फ s ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रूफ, roofs. Chef,
chefs. To some nouns ending in O, we simply add S. कुछ nouns जो O पे end हो रहे होते हैं, उनका plural बनाते हुए हम S add करते हैं. किलो, kilos. Piano, pianos. But to some nouns ending in O, we have to add es. लेकिन कुछ nouns ऐसे हैं जो O पे end हो रहे होते हैं, मगर हम उनके plural बनाते हुए es add करते हैं. For example, hero, heroes. Mango, mangoes. Some nouns form their plurals a little differently. कुछ nouns ऐसे हैं जिनके लिए कोई रूल नहीं होता, वो डिफरेंट तरीके से प्लूरल्स बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फुट, फीट. माउस, mice. Some nouns do not have any plural forms. कुछ nouns की plural forms different नहीं होती. For example, sheep, sheep. हम एक sheep के लिए भी sheep का word यूज करेंगे और एक से ज्यादा के लिए भी हम sheep का word ही यूज करेंगे. आई होप कि आपको ये सब रूल्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. अब हम इनका रिकैप करेंगे एक एक्सरसाइज के थ्रू, जो कि है चेंज द गिवन सिंगुलर्स इनटू प्लूरल्स. इन दिए हुए सिंगुलर्स को हम प्लूरल में चेंज करें. टेबल, tables. Bush, bushes. Fairy, fairies. Day, days. Life, lives. Cliff, cliffs. Radio, radios. Zero, zeros. Man, man. ये तो थी एक्सरसाइज. नाउ इट्स टाइम फॉर द होमवर्क. आपने इन सब रूल्स को अच्छे से घर में रिवाइज करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.